So what we are going to have today is so we are going to study magnetic anisotropy. Anisotropy means what? Isotropy means components are equally transforming in all directions of space. Anisotropy means there is a preferential way. Some components may transform in one direction more, or they may cancel, or whatever that is. Since we are studying magnetic fields or magnetization as a property, normally the spin domain theory के हिसाब से the magnetization is only in वन डायरेक्शन एज यू स्टडी. अब ये जो मैग्नेटाइजेशन है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ वी आर स्टडिंग फेरोमैग्नेटिक्स जो है, और जो फेरोमैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टीज है, जो अगर हम इसका एक वन इज द microscopic way of looking at it. The other is known as microscopic. Microscopic way में एक तो हमारी एक spin orbit coupling होती है, दूसरी होती है spin coupling. So at deeper level, electrons not only spin, they have an orbital angular momentum. इन दोनों की वजह से those properties come into fore. कौन सी property? जैसे हम कहते हैं ना, when the charge move, charge current density, उसी की वजह से B field produce होता है. So at deep down जो magnetic field as a property है, we just pin it down to spin orbit or these computations spins. अब ये है कि इसके लिए हमारे पास चाहिए quantum perturbation theory, और जो आप पढ़ रहे हैं field theory, but not field theory in that sense, field theory in that application sense. How we can component term by term Hamiltonian में कैसे निकालेंगे, ठीक है. So that's a detailed treatment. If you want to do research in condensed matter physics, or so we leave that thing. But there are some gross macroscopic properties. जिस तरह हम thermodynamics है ना, science, we don't go to individual atoms and molecules. फिर हम कहते हैं gross properties क्या है किसी system की. So in the same way जो ये ferromagnetics है and its magnetic analysis, we can have its understanding in some gross manner, taking some minimum properties into consideration. So we are going to take that very thing into consideration rather than going for exact perturbation theory via QFT. अब इसमें ये है, for example, जो anisotropy है and some amount of जो हम करते आए हैं, there is something called टेंसर्स है ना, द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, जिसको हम टेंसर भी कहते हैं, हाउ दे ट्रांसफॉर्म इन डिफरेंट डायरेक्शंस. फॉर एग्जांपल बी फील्ड्स एंड ई फील्ड्स के कंपोनेंट्स, सिंस ई फील्ड रेडियल है, इसका 1/r² है, बी फील्ड का नॉर्मली 1/r है, तो इसका जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना, हाउ मैग्नेटिक फील्ड्स वेरी, सो दैट्स व्हाई वी टेक रिकोर्स टू कंपोनेंट्स. So we may not these magnetic जो ferromagnetics है, उनके जो components हैं, how they translate in space. So we might be taking recourse to our understanding of tensors or tensorial understanding of things. So the anisotropy जो है, anisotropic energy or anisotropic. अब इसमें एक चीज है जो एनिसोट्रोपिक एनर्जी जो है लाइक पोटेंशियल. सो लाइक पोटेंशियल itself is invariant with respect to change in sign of time, while magnetization change sign under transformation. ये कह रहा है कि पोटेंशियल जनरली है, साइन चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये है ना साइन डिपेंडेंट कि नहीं. मैग्नेटिक फील्ड ओनली इसका कंपोनेंट जो भी क्रॉस भी है ना,
perpendicular to the component. So it will have the dependence of sign has to be incorporated such that for example जिस तरह हमारे पास है ना -1 to the power n है ना, अगर इसका 1 करोगे वैल्यू तो वापस आएगा, 2 करोगे तो वैल्यू 1 आएगा, 3 करोगे वैल्यू तो so only in odd permutations will it repeat as a sign -1. Even permutation में 1 आएगा. So it's not in all जो components है. This fact here comes into consideration that जो मैंने कहा था अभी, the change in sign जो normal potential change in sign with respect to time doesn't matter. While in magnetization sign change में ये वाला हम we take they will have even function of direction cosines, even function of direction cosines. है ना? So vectorially हम है ना कोई भी component है solid state physics में आप है ना the components कैसे we see it in terms of direction cosines. अब डायरेक्शन कोसाइंस हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का देखना है. मैग्नेटिक फील्ड में अब टाइम के साथ एवोल्यूशन इट्स आल्सो डिपेंड अपॉन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड वॉल्व कर रहा है, फॉरवर्ड में कि डायरेक्शन इसमें या रिवर्स में. अब जो यू एनिसोट्रॉपी है सो इसको इफ यू वांट टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ टेंसोरियली दिस इज m so this is just close this pen from close. MIMK means what? This is magnetization along I and ये कौन सा टेंसर है? टेंसर ऑफ रैंक. शाबाश. हाँ, टेंसर ऑफ रैंक. So it's magnetization along I, magnetization along this is beta I. And whose components? Components are function of temperature. जिस तरह हमने कल कहा था at some Curie point below and above that transition temperature suddenly magnetization zero हो जाती है, whatever that happens after second order phase transition. So in the same way these components also have they have also functional dependence upon temperature. That's the point. So maybe जो ये है this expression second order tensor इसके जब निकले ना components I के and J के आप लोग 1 2 3 1 2 जितने भी आप लोग, so we are only taking this is value for first few orders of components. It's not an exact formula, it's an approximate formula. So if we assume that this formula is की functional dependence not on all range of temperatures but on some specific range of temperatures. Specific range of temperature कौन है? जहां पर magnetization exists. ये magnetization हर जगह नहीं होती ferroelectrics की. Domain theory के हिसाब से only in certain range those domains will align in certain preferential directions at certain temperature only. ठीक है? So we are going to take the form of this equation to first few orders of potential, first few orders. कुछ पहली terms लेंगे and in a certain temperature, general temperature नहीं, at some fixed temperature this will hold.
So as t tends to theta, the quantity Bik tends to finite non-zero values. अब हमारे पास आपने you might have studied in your earlier class uniaxial crystals and biaxial crystals. क्या है? Uniaxial crystals means एक axis, biaxials means दो axes है. So at a given so जिस तरह आप करते हैं ना epsilon x, epsilon y, ऐसे. How the components transform is not equivalent to epsilon z. या epsilon x, epsilon y is equal ये भी केस बनता है. या ये बनता है ऐसे epsilon x is not equal to epsilon y is not equal to. So how the polarizability tensor optics transforms in different components. दो केस की तभी तो हम लेते हैं ना elliptical polarization. यहाँ भी सुपर कंडक्टिविटी में हमने लिया elliptical state. ठीक है. So in the same way जो ये दो components है, if you take these two components of uniaxial and biaxial axes, ठीक है, uniaxial axis है, biaxial axis हम लेंगे, and we are going to study this first few terms of this expansion at certain temperature, not general temperature. अब इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल यूनिएक्सियल क्रिस्टल होगा, अगर एक एक्सिस है तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे अलोंग एक्स एंड वाई. अगर दो एक्सिस में लेंगे इट विल हैव थ्री कंपोनेंट्स, है ना. अगर दो ये एक्सिस ली ऐसे, उसका थर्ड कंपोनेंट भी होगा ना. कंपोनेंट एक एक्सिस में कंपोनेंट होगा एक्स कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा. दो एक्सिस में होंगे तीन कंपोनेंट, तीन एक्सिस में होंगे चार. So on. So since we are going to take these things, so they can have uniaxial and biaxial के लिए we can have 2 and 3 components. And इनका अगर quadratic combination लेंगे mx square plus my square plus mz square is total m square. Which is independent of that, so cannot appear in any isotropic energy. However, expression 13.1. अब देखो ये तो जनरल इक्वेशन है, कैसे भी कोई भी थ्री डायमेंशन में कंपोनेंट्स कैसे ट्रांसलेट होते हैं. बट फॉर दिस इक्वेशन u anisotropic will be half of beta mx square plus my square. तो बीटा अपनी जगह है ना. अगर यूनिएक्सियल कंपोनेंट है तो ये my will be equal to 0 और it will come out to be परपेंडिकुलर है तो m sin थीटा, है ना. परपेंडिकुलर अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो m cos थीटा आएगा. सो यूनिएक्सियल क्रिस्टल के लिए ये आएगा. बायएक्सियल के लिए यू कैन टेक cos स्क्वायर थीटा आल्सो. ठीक है. सो दैट्स इट. एंड जो वैल्यू ऑफ बीटा जो हमारे पास है, जिस तरह हमने कल कहा था, कल इक्वेशन में हमारे पास पैरामीटर था अल्फा, which was dependent, उसका अल्फा का वैल्यू लेस देन 0 था, ग्रेटर देन 0 था. दैट डिपेंडेड अपॉन जो क्रिटिकल वैल्यू थी, फेज ट्रांजिशन पे क्या हमारा वैल्यू है, ट्यूरिंग पॉइंट पे क्या आ रहा है. द सेम वे वी कैन टेक द वैल्यू बीटा इज लेस देन 0. And u anisotropic u anisotropic is in the z direction.
So it's maybe in the xy plane. xy plane तब ये if it's xy plane ये mz है. अगर x स्क्वायर है ये yz में accordingly. Because the direction जिस तरह आप कहते हैं ना magnetic field is perpendicular to the propagation is perpendicular to the direction of the plane जो जिसमें वो lie कर रहे हैं. So this is for uniaxial. If the plane is xy, so this is the energy. This magnetization किस direction में होगी. And this is the total energy हमारे पास क्या है. तो अब हम what we are going to do, we are going to have our जो हमारी yesterday how we define potential for general magnetic fields के लिए. ठीक है. For if you remember कल हमने U phi का लिया वैल्यू. Potential in general magnetic field में क्या potential है. ठीक है. So we had the value of phi in terms of phi naught m. अब इसमें सिर्फ हम ये वाली टर्म ऐड करेंगे. The other terms for magnetic जो potential हमने in terms of these terms yesterday we are going to use if I is equal to k yeah x for it's b mx square minus m dot h minus h square by 8 pi. So these three terms you know yesterday also this and this. We have only included this term for uniaxial crystals. ठीक है. तो ये x square डायरेक्शन में आएगा हमारे पास. अगेन हम क्या कर रहे थे. We just try to find the stable point है ना at some. तो जो पोटेंशियल को हम वैरी करेंगे with some distance and उसको जीरो के बराबर रखेंगे. That will give us phase transition का point या inflection point. In the same way we are going to see for जो components of the magnetic field जो ये है ना ये magnetization vis-a-vis potential how it will vary. अब जो हमारे पास mx है हमारे पास we are only for uniaxial crystals taking sin square theta. ठीक है. we will add sin square theta. Got my point. ठीक है. Now what we are going to do, we are going to differentiate in some general sense this thing. So what will be equal to phi naught pi m पहले हम इसको what we are going to do h के भी components लेंगे along x direction and along z direction. So now you do one thing. You do d phi by dx. d phi by d theta, sorry. Theta in the sense कि theta will give you orientation, angle. इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है. मैग्नेटाइजेशन किस डायरेक्शन में. ठीक है. तो for d phi by theta at some equilibrium point if it's zero, तो what we are going to see, तो ये क्या आएगा. ये भी जीरो आएगा, ये कांस्टेंट है. ये भी जीरो आएगा, ये सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड है. This term will be zero, this term will be zero. We are going to differentiate. इसका आएगा बीटा m square, ये आएगा 2 sin theta cos theta. ये 2 के साथ कट जाएगा. ये आएगा m hx sin theta. ये आएगा m hs mz. ये माइनस आएगा माइनस sin theta. ये cos theta है. हाँ ये भी sin theta है. No sorry, ये किसमें sin theta होगा, एक किसमें cos theta होगा. yes. तो इसमें एक आएगा cos theta. If it's cos theta ये sin theta आएगा. अगर ये sin theta है ये cos theta आएगा. So if it's zero, so it will be beta m sin theta cos theta is equal to h cos theta hx cos theta minus hz sin theta. This is equal to 37.5. अब ये है ना ये algebraic equation of fourth degree है. अब हम एक काम करेंगे, what we are going to write zeta को in terms of हम sin theta लिखेंगे.
So if you write zeta in terms of sine theta, so this equation will take this form: beta m zeta cos theta minus hx cos theta minus hz zeta. अब इसमें एक काम करेंगे, एच एक्स है ना, ये cos थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस जीटा स्क्वायर माइनस एच जेड जीटा। इस तरह बीटा एम जीटा cos थीटा को 1 माइनस जीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। सो नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इट विल टेक दिस फॉर्म। And these constitute which are coefficients of all powers. Powers of zeta which are not zero, which are not equivalent to zero. अब देखो इसमें अब इसका रूट्स निकालो। अब निकालते हैं ना रूट्स क्यूबिक इक्वेशन के, क्वाड्रिक इक्वेशन के, है ना। तो इसमें दो स्क्वायर है, इसमें दो स्क्वायर है। So I will not solve this equation, so but in some general sense, looking at it in the first place, so इसके दो रियल और 4 रियल रूट्स होंगे, लेस देन यूनिटी। एंड दे ऑल कंस्टिट्यूट, क्योंकि ये जो रूट्स है ना, ये निकाल रहे हैं ना सम एक्सट्रीमा पॉइंट पे, दे आर सॉल्यूशंस एट सम एक्सट्रीमा पॉइंट। अब ये यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, माइनस एच जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन सॉल्व दिस इन टर्म्स ऑफ जीटा, है ना। जीटा स्क्वायर ये आएगा इसमें, यू कैन सॉल्व दिस विल बिकम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ जीटा। अगर इसको सॉल्व, ये आएगा ना, ये जीटा 4 आएगा, जीटा स्क्वायर आएगा एंड जीटा आएगा, तो क्वाड्रिक इक्वेशन आएगी, जीटा 4 में आएगा। यू हैव टू सॉल्व, दैट्स व्हाई इट विल हैव 4 रूट्स, ठीक है। सो वंस यू सॉल्व इट इन टर्म्स ऑफ जीटा व्हिच हैज 4 रूट्स एट सम स्टेबल मिनिमम, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो इट विल हैव this function has one minimum and maximum, पहले में दो रूट्स जिसमें होंगे, एक मिनिमम एंड मैक्सिमम है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इसमें ये हो सकता है इन द सेकंड केस, इसमें टू मैक्सिमा एंड टू मिनिमम। तो इस वाले इक्वेशन में, जो क्वाड्रेटिक वाले में आएगा, एक मैक्सिमा एक मिनिमम। जो क्वाड्रिक है जिसमें 4 पावर है, उसमें 2 मैक्सिमा आएंगे, 2 मिनिमम आएंगे, ठीक है। सो व्हाट डूइंग दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फर्स्ट हम एनालिटिकली इसको देखेंगे, हम देखेंगे ज्योमेट्रिकली मैग्नेटाइजेशन को कैसे हम स्टडी करेंगे। एंड वी आर सेइंग दैट जो बीटा है उसका फंक्शनल डिपेंडेंस है टेम्परेचर के साथ, हाउ इट विल पैन आउट ग्राफिकली, पिक्टोरियली एट लीस्ट, ठीक है। अब ये है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ hx and hz when the parameters vary continuously अब ये है ना, एक हो गया कि
मैक्सिमम हो गया। इसमें मैक्सिमम you go from maximum, then you go to minimum, then you go to maximum, then you go to, because there are two maxima and two minima. So अगर इसको आप ऐसे ग्राफिकली करोगे ना, ये मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा, फिर ऐसे आएगा, ये सॉर्ट ऑफ थिंग, टू मैक्सिमा टू मिनिमा। अब ये कह रहा है ये कंटिन्यूसली नहीं आ रहा है, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, ये कंटिन्यूस, इस तरह फेज ट्रांजिशन हो रहा है ना कंटिन्यूसली एट सम फंक्शन टेम्परेचर पे, एट सम फंक्शनल डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, जिस तरह हम क्यूरी पॉइंट आ रहा था यस्टरडे, फॉर बीटा लेस देन और ग्रेटर देन 0। इसी तरह एट सम this thing you will have two maxima and two minima as solutions along that point, saddle point, जो भी आप कहना चाहिए। So phi is thermodynamically stable, and अब ये है कि what are the stable points। Normally जो stable points हम लेते हैं, अगर axis को रखेंगे, जो इस माइनस डायरेक्शन में आएंगे, it's sort of unstability। ये पॉइंट हम लेते हैं मेटास्टेबल पॉइंट, ये दिस माइट बी स्टेबल, दिस स्टेबल एंड मेटास्टेबल और अनस्टेबल में भी चॉइस ये है कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है ना, पार्टिकल्स विल टेंड टू मिनिमम एनर्जी। सो इन द सेम वे एट सम मिनिमम लेवल, जो मैग्नेटाइजेशन जहां मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वो हम लेंगे दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो with the functional dependence on temperature, अब टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे, जैसे आपके पास कोई मैग्नेट है ना, यहाँ पर कुछ चीज है वो अट्रैक्ट कर रही है, आप यहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, इट विल नॉट सडनली शो दैट इट बिकम्स अनमैग्नेटिक। टेम्परेचर इंक्रीज करते करते एट सम पॉइंट इट विल बिकम, उससे पहले उसके बाद व्हेन द सबस्टेंस हैज मैग्नेटाइज्ड एज ए मटेरियल, एट व्हाट पॉइंट इट विल बिकम लीस्ट मैग्नेटिक or most magnetic. So it will have those four solutions, as two maxima and two minima. उसी का हम so उसी को ये कह रहा है, if I use the words of the book, he is saying that when parameters vary continuously, one case passes into the other, and where the point one maxima and one minima collides, and one minima collides means मिलते हैं, दो मैक्सिमा दो मिनिमा मिलते हैं, ठीक है। अब इसी को कहते हैं द कर्व हैज अ पॉइंट, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कैन यू नो से मी व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड द एक्सट्रीम? इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू भी 0 आ रहा है एज कंपेयर टू। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, जो फंक्शन है ना ये फाई का हम लेंगे डी थीटा लेंगे, हाउ इट वेरीज विद एंगल, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो ऑन है। सो क्योंकि हमने पहले ही कहा था MIX है ना, वी आर गोइंग टू टेक द टर्म्स फर्स्ट फ्यू ऑर्डर्स, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हायर ऑर्डर एक्सप्रेशंस, सो वी विल टेक टू डेरिवेटिव्स विल सफाइस फॉर अस। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, एंड इट्स एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट और 0। सो द इक्वेशन 37.5, दिस इक्वेशन जो हमारे पास है, इसका फॉर्म जो हमारे पास आएगा, so you divide both sides with sin theta cos theta, ये आएगा hx by sin theta and hz by cos theta। इसका फॉर्म आएगा ऐसे, इसका फॉर्म आएगा इसका डिवाइड बोथ साइड्स, इट विल बी बीटा है। Now we are going to differentiate, फाई में है ना, in terms of theta। एक बार डिफरेंशिएट करोगे ये साइन का आएगा cos थीटा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी, पहले आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना d by df थीटा ऑफ 1 by sin थीटा, ये आएगा 1 by cos स्क्वायर थीटा, फिर उसका एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 1 by cos क्यूब थीटा, ये आएगा 1 by sin क्यूब थीटा, एंड द इक्वेशन विल टेक द फॉर्म sin क्यूब थीटा
and this is constant, so it will be cos cube change. Again, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको फर्दर दिस इक्वेशन है ना, ये अगर आप इसको फर्दर करोगे आप, इट विल हैव दिस फॉर्म, ये इसको यहाँ लाओ, सो इट विल प्लस इज इक्वल टू 0. सो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, इट विल बी so I have done nothing. I have simply solved it under these second order derivatives, जिस पर दो inflection points आ रहे हैं. Rather ये अब ये सब जो हम कर रहे हैं, ये geometrical analysis, if you take इसका एक form लेंगे in the xz plane, so it will represent ऐसे, इसका represent ऐसे करेंगे, ऐसे. It's beta m, it's minus beta m, it's minus beta m, it's beta m. तो ये वाला पॉइंट हम कहेंगे ये अनस्टेबल है, ये है we can take it as metastable. So this divides the plane into two parts, region metaspheres which do not exist, that's outside the curve. Because as h tends to 0, as h tends to infinity, only one direction can be stable. अब वही कह रहे हैं, the existence of metastable states is called hysteresis. Hysteresis समझते हो? Hysteresis सुना है? Hysteresis सुना है? So this is another way of, you might have simply read in your earlier classes. Hysteresis is a phenomenon when the substance loses its magnetization, or it is becomes irreversible to come to the original state. ऐसा ही कुछ पढ़ा है ना? If you remember, this is an irreversible change of state in a ferromagnetic body when external magnetic field is applied. So hysteresis is a अब ये we are coming to your solid state physics. Hysteresis is an irreversible change of state in a ferromagnetic body when external magnetic field is applied. So absolute value of hysteresis cannot occur outside the curve. The point to say is that we have arrived at from this graph, you can say how we can describe hysteresis. Okay? So it's a pictorial or mathematical way of trying to understand a certain magnetic phenomenon which has functional dependence on temperature, and in turn how the component, how the magnetization is dependent upon different components in space. Okay, so this is the thing we have studied. So again, if we come back to our original equation कौन सी हमारी थी? I'll take 10 or 15 minutes. थोड़ा सा पेशेंट रहो, 10-15 minutes. जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो थी हमारे पास, जो पोटेंशियल की ओरिजिनल इक्वेशन थी, again H can be greater than beta m. So m is the magnetization, H is a sort of magnetic field or induction, you can say, which you are applying. You can say it's B or induction also. B m is a magnetization. इस तरह polarizability है, इस तरह ये ना magnetization में ये है. Depends upon material to material, it will change. अब इसमें भी H can be greater than, तो phi has only, so इसी तरह H can be greater than beta m or H can be less than beta m. So we'll have corresponding जो हमारा पास जो वैल्यू है, so इसमें भी जो sin थीटा का वैल्यू है ना,
It may be symmetrical or it may not be symmetrical. About two equilibrium states. So हमारे पास जो मिनिमा है ना मिनिमा, so हमारे पास एक मैक्सिमा नहीं आया, हमारे पास दो मिनिमा आ गए, दो मैक्सिमा. So its sort of potential is वो क्या कहते हैं, it's somewhat हमारे पास इक्विलिब्रेशन पॉइंट्स दो है. जिस तरह हम सुपर कंडक्टिविटी में भी क्या कराते हैं, वी से दैट इट्स अ डायनेमिक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. तभी वो हमने मिस्टर इफेक्ट एंड अदर क्वांटिटीज डिस्क्राइब की थी. That condition. So in the same way you can have this thing, that thermodynamic quantities in equilibrium states. So which means two phases can exist in contact in which the field H is same. But magnetization and therefore induction is different. अब इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं, एक कर सकते हैं काम, वी आर टेकिंग सम थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कोई जैसे डोमेन लेते हैं, ठीक है, उसमें हम एक अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, एंड दिस एनालिसिस होल्ड्स. अब उसी में हम कर सकते हैं कि एक वॉल्यूम लेते हैं कंडक्टर का, और तो उस कंडक्टर में एक स्मॉल रीजन लेते हैं, विल टेक कंडक्टर और मैग्नेट, जिसमें हमको मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी लेते हैं, उसका छोटा सा हिस्सा लेते हैं ऐसे. बट इतना छोटा हिस्सा लेते हैं, बट जो ये छोटा हिस्सा है ना, स्मॉल पोर्ट, इट्स ग्रेटर देन द स्मॉल डोमेन्स. एक तो डोमेन थ्योरी है ना, डोमेन थ्योरी ये है कि अल्टीमेटली जो मैग्नेटिज्म एज अ फिनोमेना है, इट्स अल्टीमेटली टू दोस डोमेन्स, एंड यू कैन ट्रेस इट, उसका कुछ 10⁻⁻⁻ नैनोमीटर कुछ है साइज, ठीक है. सो दिस जो प्रीवियस एनालिसिस हमारा था, इट वाज अंडर स्ट्रेन कंस्ट्रेशंस. हमने फर्स्ट ऑर्डर भी ली, MIX MY, फंक्शनल डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ओनली इन अ सर्टेन रेंज एरिया, एंड वो एनालिसिस करते करते हमारे पास दो स्टेबल पॉइंट्स आ गए, एंड वी कुड एक्सप्लेन हिस्टेरियस कर्व बाय दिस पिक्टोरियल, ठीक है. सो दिस वाज एन अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस. तो रियल मटेरियल्स है ना मैग्नेटिज्म या कुछ जो आप लैब में करते हैं, दे मे बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, उनका ट्रांजिशन टेम्परेचर एक नहीं होगा, कुछ होगा, आयरन का एक होगा, कॉपर का कुछ होगा, लिथियम का कुछ होगा, ठीक है. सो इफ वी जस्ट स्लाइटली विल डिपार्ट फ्रॉम दिस मॉडल एंड टेक ए सर्टेन स्पेसिमेन, उसका छोटा साइज लेंगे, वो छोटा इतना छोटा नहीं होगा कि वो डोमेन से थोड़ा बड़ा होगा, डोमेन का साइज उससे बड़ा होगा, बट टोटल जो साइज ऑफ दिस से ये होगा. दिस इज आवर अनदर एक्सरसाइज. आई जस्ट इसमें 5 मिनट में आई जस्ट रैप इट अप व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अब इसमें थोड़ा सा आप ये ओनली वन थिंग इज दैट beta x is equal to, so you just for some time how we can get these betas in different directions. अब इसमें the point is this model, if you go and study the book, it is closely related to the crystal. अगर हम कोई क्यूबिक क्रिस्टल लेंगे ऐसे, the conductor is made of crystals, ठीक है. अब क्यूबिक क्रिस्टल में क्या है, the components x direction, y direction,
z डायरेक्शन हो, है ना, उसके कंपोनेंट्स कैसे ट्रांसलेट और ट्रांसफॉर्म करेंगे इफ यू आर गोइंग टू टेक दिस मॉडल इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। तो उसमें जो ये है ना हमारा जो टर्म हमने कहा था ना mx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर प्लस mz स्क्वायर, हमने सिर्फ mx साइन थीटा लिया फॉर यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स, ठीक है। एंड जो कंपोनेंट्स हमने लिए थे वो इन टर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर टर्म टेंसर लिए थे। अब ये टेंसर कैसे, हाउ द टेंसर्स कंपोनेंट्स विल ट्रांसलेट इन दिस वेरी मॉडल, इसमें फर्स्ट ऑर्डर जो और एनिसोट्रॉपी जो कैसे ट्रांसलेट करेगी, सो एक्सपेंशन इन द एनिसोट्रॉपिक टर्म्स कैसे आएंगे, सो they are generally less strong as compared to uniaxial and biaxial terms, biaxial systems. I just leave it for you. So what we are going to say, the model, we can compare it with a model which is composed of cubic crystals, which are not cubic crystals, which have cubic symmetry. जिसे आप पढ़ते हैं ना सॉलिड स्टेट में फर्स्ट चैप्टर में, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बॉइडल, ऑर्थोरोम्बॉइडल, and there is a particular way beginner, there are 32 ways we can classify those crystals solid state physics में, ठीक है। तो इन द सेम वे जो डिफरेंट एटम्स या मैटर के डिफरेंट हैं, दे उनकी अपना एक ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, फ्रॉम विच दोस यूनिट सेल कैसे कैसे बना होता है। सो इन द सेम वे वी आर डूइंग द सेम थिंग, इसका मैग्नेटाइजेशन फॉर सिंपल यूनिएक्सियल एंड बायएक्सियल क्रिस्टल। नाउ यू आर कंपेयरिंग द सेम विद द क्यूबिक क्रिस्टल्स विद दिस अप्रोक्सीमेशन, है ना। एंड उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स दो ही नहीं आएंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा आएंगी। So we can compare this model with the, you can see into the book थोड़ा सा डिटेल में, so you just you are feeling bored, otherwise you can just, so उसमें जो U फर्स्ट एनर्जी आएगी ना, फर्स्ट टर्म एनर्जी आएगी, U एनिसोट्रॉपिक जो आएगी, it will come out to be mx square, my square, mx square, mz square, my square, mz square, so on and so forth. If I just use the word strictly speaking, a ferromagnetic cubic crystal, when spontaneously magnetized along one of the directions of easy, ceases to possess a cubic symmetry. So I'll end it by saying this कि मतलब there is enough जो नेचर में है, नेचर में enough क्या है, डाइवर्सिटी है, not only materials, उनकी प्रॉपर्टीज में। And we are basically studying magnetic anisotropic energy. For simplest case, we could also come up how to define hysteresis from this curve. But you can also go for cubic crystals and other crystals, which you can see. And if you see the last sentence, इसका ये है ना, इसी चैप्टर का बुक का वो लिख रहा है वहाँ पर कि analytical expression, जैसे ये है ना, हम we could somehow pictorially see it in terms of some analytical formula, but nature is too complicated. हमारे पास analytical formula ही नहीं है which will correspond to that phenomenon, because we are using a simple model, किसी type of temperature functional dependence है, uniaxial and biaxial symmetry, ठीक है, first order terms ही नहीं हमने, ठीक है। सो बट नेचर में अगर आप मैग्नेटाइजेशन है ना, वो आयरन में कहाँ होगी, कॉपर में कहाँ होगी, सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। एंड हाउ कंपाउंड्स और मटेरियल का उसका सॉलिड क्यूबिक स्ट्रक्चर, लाइट स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन एच कैसे होगा, सो दीस आर ऑल डिटेल्स। और इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च और एज ए क्यूरियोसिटी आल्सो, सो दिस लैंग्वेज बुक इट्स ए फर्स्ट स्टॉप।